Hello everyone, let us discuss some other questions related to trigonometry. Very first is find out the value of sin 30 into cos 30 into tan 60. Okay, what is its value? Let us calculate. Solution है sin 30 into cos 30 into tan 60 would be equal to 1/2 4 sin 30 into under root 3/2 4 cos 60 cos 30. Tan 60 is nothing but under root 3. So in that case, that would be equal to 3/4. This is our answer. क्या किया हमने यहाँ पर sin 30, cos 30, tan 60 सभी की वैल्यू पुट कर ली है. That is 1/2 under root 3/2 under root 3 and after multiplying under root 3 से under root 3 को multiply करेंगे 3 आया, 2 को 2 से तो 4 आएगा. This is our answer. Now let us move to next question. And this is about question number 2. Now find out cosec square 30 into sin square 45 minus sec square 60. So everyone, let us calculate it. It means कोसेक 30 का स्क्वायर करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 2. इसका स्क्वायर हो जाएगा फिर यहाँ पर साइन 45 का मतलब है 1/√2 स्क्वायर माइनस सेक 60 का मतलब होता है व्हाट, दैट इज 2/√3 इसका स्क्वायर. Wait, this is not true. हल्का सा माइनस चेंज होगा यहाँ पे. स्टूडेंट्स cos 60 की वैल्यू होती है 1/2. इन दैट केस sec की वैल्यू जो होगी दैट इज इक्वल टू 2 इसका स्क्वायर. नाउ इज इक्वल टू 4 इंटू 1/2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4/2 minus 4 is equal to 2 minus 4 minus 2 is our answer. Okay, let us move to next question. And this is question number next. Here is given sin 30 cos 45 plus cos 30 into sin 45. Let us calculate. is equal to रहेगा sin 30 के प्लेस पे 1/2 इंटू cos 45 के प्लेस पे 1/√2. नेक्स्ट प्लस में √3/2 आएगा cos 30 के प्लेस पे एंड sin 45 के प्लेस पे इट वुड बी 1/√2.
we have put all the individual values, that is 1/2 under root 2 plus under root 3 upon 2 under root. What does it mean? 2 under root 2 and 1 plus under root 3. Under root 3 plus 1 upon 2 under root. कैसे सॉल्व हुआ है? लेट अस सी. sin 30 cos 45 प्लस cos 30 sin 45 सभी की वैल्यूज पुट करेंगे. तो sin के प्लेस पे 1/2, cos 45 इज इक्वल टू 1/√2, cos 30 के प्लेस पे √3/2 एंड दैट इज 1/√2. कैलकुलेटिंग 1 की 1 से मल्टीप्लाई 1, 2 √2 आ जाएगा यहाँ पे प्लस √3 की मल्टीप्लाई एंड 2 √2. बोथ द डेनोमिनेटर्स आर इक्वल. सो 2 √2 और न्यूमरेटर में आएगा 1 प्लस √3 या फिर बी में से √3 प्लस 1 अपॉन 2 √2. Question number next. Tan square pi by 6 plus tan square pi by 4 plus tan square pi by 3. इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. सोल्यूशन इज हियर. tan पाई बाई 6 की वैल्यू होती है स्टूडेंट्स 1/√3 इसका होल स्क्वायर प्लस tan पाई बाई 4 की वैल्यू होती है 1/√2 इसका होल स्क्वायर प्लस tan पाई बाई 3 की वैल्यू होती है व्हाट √3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 प्लस 1/2 plus 3. After calculating it, you will see here 6 is LCM. Here would be 2 plus 3 plus 18 is equal to 23/6. This is our answer, or we may say 3 times. Now 5/6. Let us see if something is missing here. Wait till now. There is some mistake. Let us remove it. यहाँ पर tan पाई बाई 4 के प्लेस पे हमने 1 लेना होगा एज पर अवर स्टैंडर्ड वैल्यूज. तो 1 स्क्वायर यहाँ पर भी 1 आ जाएगा. सो देयर विल बी सम माइनर चेंजेस इन द एंटायर क्वेश्चन. दिस वुड बी इक्वल टू 4 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 4 and 1/3. दिस इज अवर आंसर. tan पाई बाई 6 के प्लेस पे 1/√3, tan पाई बाई 4 के प्लेस पे 1, tan पाई बाई 3 के प्लेस पे √3 होल स्क्वायर्ड हो गया है सबका. 1/3 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 प्लस 1/3. सो 4 and 1/3 इज अवर आंसर. Here is tan 60 into cosec square 45 plus sec square 60 into tan 45. इसको कैलकुलेट करते हैं. Solution is
tan 60 का मतलब है एवरीवन √3 इंटू कोसेक 45 का मतलब sin 45 होता है 1/√2, सो दिस वुड बी √2 cos दिस इज इट्स रेसिप्रोकल प्लस cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 की हो जाएगी वैल्यू 2 होल स्क्वायर, tan 45 की वैल्यू होती है 1 इज इक्वल टू √3, सो इसमें 2 आ जाएगा तो 2 √3 प्लस 4 इंटू 1 2 √3 प्लस 2 इंटू √3. This is our answer. How we have calculated it? Tan 60 cosec square 45 sec square 60 tan 45. इन सभी वैल्यूज को हम अभी पुट कर लेते हैं. √3 इंटू √2 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 to the 4 इंटू 1, यहाँ पर ये 2 हो जाएगा तो 2 √3 प्लस 4 इंटू 1, तो 2 √3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू √3 प्लस 2. दिस इज आवर आंसर. Let us move to next question. The question is question 6. 1 minus tan square 45 upon 1 plus 2 tan square 45. Solution is here. यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू 45 का मतलब है tan 45 इक्वल टू 1. 1 प्लस 2 इंटू tan 45 का मतलब होता है 1. सो 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 1. दिस वुड बी इक्वल टू 1 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 is equal to minus 1 upon 3, and this is our answer. How we have calculated it? 1 minus 2 sin tan square 45 upon 1 plus 2 tan square 45. तो 1 minus 2 45 tan 45 के प्लेस पे 1 ले सकते हैं स्क्वायर, 1 plus 2 tan 45 के प्लेस पे 1 स्क्वायर. So 1 minus 2 into 1 upon 1 plus 2 into 1. So 1 minus 2 upon 1 plus 2 is equal to minus 1 upon 3. This is our answer. Next question is, prove that what cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30 is equal to 0. This side is LHS, this is RHS. Solution is here. Let us first take LHS is equal to cos 60 के प्लेस पे आ जाएगा एवरीवन अंडर 1 अपॉन 2. cos 30 के प्लेस पे रहेगा अंडर रूट 3 अपॉन 2 माइनस sin 60 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3 अपॉन 2 इंटू sin 30 की वैल्यू होती है 1 अपॉन 2. This is equal to under root 3 upon 4 minus under root 3 upon 4 will be equal to 0, equal to RHS. Hence proved. What we have done here is
Prove that make cos 60 cos 30 minus sin 60 sin 30 is equal to 0. LHS, this is LHS, this is RHS. Let us first take LHS equal to sin cos 60 के प्लेस पे 1/2, cos 30 के प्लेस पे √ 3/2, sin 60 के प्लेस पे √ 3/2, sin 30 के प्लेस पे 1/2 इज इक्वल टू √3 का 1 से मल्टीप्लाई ये आ गया, 2 में 2 से तो 4 आएगा, √3 का 1 से तो ये 2 से 2 4 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू RHS. Henceforth LHS is RHS. Everyone, let us discuss about the next question, and this is cos 30 into cos 60 minus sin 30 into sin 60 is equal to cos 90. We need to prove it. Solution देख लेते हैं. This is obviously LHS and this is RHS. Now LHS is equal to cos 30 cos 60 minus sin 30 sin 60 is equal to √3/2 into 1/2 minus 1/2 into √3/2. We have put all the respective values here. Is equal to √3/4 minus √3/4 after multiplying both. This is equal to 0, and obviously this value is for cos 90. This shows that is equal to RHS. Hence proved. What we have done here is LHS दिया हुआ है इज इक्वल टू RHS प्रूव करना है. लेट अस टेक LHS फर्स्ट. cos 30 cos 60 minus sin 30 sin 60 is equal to √3/2. This is the value of cos 30. Now cos 60 is 4 1/2, sin 30 is 1/2, and sin 60 is √3/2. This gives us √3/4 minus √3/4 is equal to 0, is equal to cos 90, and that is equal to RHS. So this is proof now. So the next question is,
cos 60 is equal to 1 minus 2 sin square 30 is equal to 2 cos square 30 minus 1. This is the question and we need to prove the statement separately. Let us consider these are three different sides of the equation. Solution is so everyone, let us begin it. So second part is equal to 1 minus 2 sin square 30. It means is equal to 1 minus 2 into 1 minus cos square 30 is equal to 1 minus 2 into 1 minus cos 30 stands for under root 3 upon 2 square is equal to 1 minus 2 1 minus 3 upon 4 is equal to 1 minus 2 into 1 upon 4 is equal to 1 minus 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, and this stands for cos 60. This is equal to this. We have shown it. Next part is part third is equal to 2 cos square 30 minus 1 is equal to 2 into 1 minus sin 30 minus 1 this is equal to 2 into 1 minus 4 minus 1 is equal to 2 into 3 upon 4 minus 1 is equal to 3 upon 2 minus 1 is equal to what? 1 upon 2 is equal to cos 60. Hence proved. So students, what is the story here? Let us see. We are given with the three parts of the question. So we have shown this is equal to this. First of all, let us take second part. We need to prove it equal to part 1 is equal to 1 minus 2 sin square 30 1 minus 2 into 1 minus cos square 30. Why this is so? Because sin square theta plus cos square theta is equal to 1. So we have applied this identity. In that case, 1 minus 2 into 1 minus under root 3 upon 2 is its place whole squared is equal to 1 minus 2 into 1 minus 3 upon 4 is equal to 1 minus 2 into 1 upon 4 is equal to 1 minus 1 upon 2 is equal to 1 upon 2, that is equal to nothing but the cos 60. So we have shown here part second is equal to part 1. Now taking in the consideration part 3 is equal to 2 cos square 30 minus 1 is equal to 2 into 1 minus sin square 30. Why? Because we have applied this formula once again here. Now 2 into 1 minus sin square 30 minus 1 is equal to 2 into 1 minus 1 upon 2 at the place of sin 30 whole squared minus 1
is equal to 2 into 1 minus 1 upon 4 minus 1 is equal to 2 into 3 upon 4 minus 1 after calculating this bracket. Now is equal to 3 upon 2 after multiplying minus 1 is equal to 1 upon 2 is equal to cos 60, and that is nothing but equal to part 1. So we have shown here part 3 is equal to part 2. This is proved. Now let us move to the next question, and this is 4 cos square 30 minus 3 cos 30 is equal to cos 90. Solution में this is LHS, this is nothing but RHS. Let us take LHS first. Is equal to 4 cos square 30 minus 3 cos 30 is equal to 4 into under root 3 upon 2 at the place of cos 30 whole squared minus 3 into under root 3 upon 2 at the place of cos 30 again. Here is equal to 4 into 3 upon 4 and minus 3 under root 3 upon 2. Let us see it once again. 4 cos square 30 minus 3 cos 30 is equal to cos 30. So everyone, here is equal to 3 minus under root 3 upon 2. So everyone, there is some little bit mistake in the printed question, because here this is cos 0. Okay, this is what? This is cos 0. So once again here this will be cos 0. So at the place of cos 0 this will be 1. Now this term will be equal to 3. So 3 minus 3 is equal to 0, and that is equal to cos 90 is equal to RHS. Hence proved. What we have done is LHS equal to 4 cos square 30 minus 3 cos 0. So 4 into under root 3 upon 2 at the place of cos 30 squared minus 3 into 1. 4 into 3 upon 4 minus 3.
3 minus 3 is equal to 0 is equal to cos 90 is equal to RHS. This is proved. Let us take the next question. This is 1 minus sin 60 upon cos 60 is equal to 1 minus tan 30 upon 1 plus tan 30. This is LHS and this is RHS. Solution. LHS is equal to 1 minus sin 60 upon cos 60 is equal to 1 minus under root 3 upon 2 upon 1 upon 2 is equal to 2 minus under root 3 upon 2 upon 1 upon 2 is equal to 2 minus under root 3. Similarly, RHS is equal to 1 minus tan 30 upon 1 plus tan 30. It will give us 1 minus 1 upon under root 3 upon 1 plus 1 upon under root 3. This will be equal to under root 3 minus 1 upon under root 3 under root 3 plus 1 upon under root 3. So after that under root 3 minus 1 upon under root 3 plus 1 into under root 3 minus 1 under root 3 minus 1. Let us calculate it. So 3 minus 2 under root 3 plus 1 now upon 3 minus 1 is equal to 4 minus 2 under root 3 upon 2. This gives us 2 into 2 minus under root 3 upon 2 2 minus under root 3. So here LHS is equal to RHS. This is proved. So everyone, this is all about today's lecture and we will see you soon. Thank you.